amino acid. So first of all, what is the amino acid? Amino acid is a biomolecule. So now question arises that what is the biomolecules? So biomolecules, before going to the amino acid structure, we should know something about the biomolecules. So biomolecule. So what is the biomolecule? Biomolecule is simply the organic compound present in the living organism is called as the biomolecules. So now what is the organic compound? That means any molecule which contains carbon is called as the organic compound. So the amino acid is also contains the carbon group. So that's why the amino acid is also called as the biomolecules. So the biomolecules, beside the presence of the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus are present. So now the biomolecules can be divided into two parts. One is called as the micromolecule and another is the macromolecule. So what is the micromolecule? What is the macromolecule? So the micromolecule means the compound which has molecular weight less than 1000 Dalton is called as the micromolecule, whereas the compound which has molecular weight more than 1000 Dalton is called as the macromolecules. So the macromolecules, the examples of the macromolecules are the amino acid, the sugar, the nucleic acid. Okay, so the macromolecule means by combining these micromolecules, the macromolecules are formed. For example, the amino acid, they are joined together to form the protein. So now the protein is the macromolecule. So for example, the one sugar, then it joins to another sugar, then it forms the carbohydrate or the polysaccharide. For example, the nucleotide. For example, this is the nucleotide. So the nucleotide, they are joined together to form the nucleic acid. For example, the DNA or RNA. So these are the macromolecule and these are the micromolecules. So that means the micromolecule, they are joined together to form the macromolecule. So now come to the amino acid structure. So if you look the structure of the amino acid structure, it looks like this. COO minus, NH3 plus, R group and H. So that means this is the structure of the amino acid. That means the amino acid has the four different groups. One is the COO minus, one is the NH3 plus, another is the H, another is the R group. So R group means different types of the group, that is called as the R group. So what is the amino acid? That means let's suppose this is the amino acid. This amino acid joins to another amino acid. Again to this one another amino acid is joined. And again one amino acid is joined. So now this is called as the protein. So that means the amino acid are the constituents of the protein. That means the protein is formed by amino acid. That means many amino acids are joined together to form a protein structure. So then each one is called as the amino acid. So look at this structure. So the structure is like this. That means one CO minus group, or it is also called as the carboxylic group. This is the NH3 plus. It is called as the amino group. So that means one amino group is present and another carboxylic group is present. And that's why it is called the amino acid. That means one amino group and another acid group, CO minus, that is the acidic. So that means amino and the acid is present. So that's why the amino acid is also called the amino acid. That means amino and the acid, both are present in this molecule. So the amino acid structure, and it contains one positive charge and one negative charge. So because of this presence of both negative charge and both positive charge, it is the amino acid is also called as the
deuteronic molecule. So what is the deuteronic molecule? That means any molecule which contain two different types of the charges. That means both positive and the negative charges are present in the amino acid structure. So that's why the amino acid is also called as the deuteronic molecule. Then again, the amino acid contains amino group, and the amino group means plus, or it is the basic. And the carboxyl group, obviously it is the acidic group. So that means both acidic and the basic group is present in the amino acid structure. So that's why it is also called as the amphoteric molecule. So what is the amphoteric molecule? That means the structure in which both basic and the acidic group is present, and the structure is called as the amphoteric molecule. So amino acid is also called as the amphoteric molecule, or it is also called as the deuteronic molecule. Deuteronic molecule is called because of the presence of the two different charges. One is the negative charge, one is the positive charge. The amphoteric molecule is called because it contains both basic as well as acidic group. So that's why it is called the amphoteric molecule. So now look at the structure carbon. And the carbon it is called as the C alpha. What is the alpha? The alpha means it is the chiral carbon. So chiral carbon means the carbon which is joined to four different groups is called as the chiral carbon. Look at the structure. This is the C or the carbon, and it is joined to the amino group, and another is the carboxyl group, another is the H or the hydrogen, another is the R group. So that means four different groups are joined to the same single carbon molecule, and now this carbon is called as the chiral carbon. So, and it is designated as C alpha. So this is all about the structure of the amino acid. So now, how many amino acids are present in the living organism? Now answer will be 20. That means 20 amino acids are present in the living organism. So now what are they? What are the different types of the amino acid? Let's look about this. The amino acid can be acidic, it can be basic, it can be aromatic, and it can be neutral. Okay, so acidic, two amino acids are acidic. One is the aspartate, another is the glutamate. Okay, the aspartate is also called as the aspartic acid. The glutamate is also called as the glutamic acid. So don't confuse about this name. So aspartate is also called as the aspartic acid, and glutamate is same as glutamic acid. So these two amino acids are the acidic, and the basic is lysine, arginine, and histidine. These three amino acids are the basic. And the aromatic, phenylalanine, tyrosine, tryptophan. So these three amino acids are the aromatic. So what is the aromatic? Aromatic means the molecule which contains a benzene ring structure is called as the aromatic amino acid. That means this phenylalanine, tyrosine, tryptophan, they are the modified benzene ring structure. So that's why these three amino acids are aromatic amino acid. And rest, that means 3, 3, 6, and 8. That means rest 12 amino acids are the neutral. For example, the proline, the glycine, alanine, leucine, isoleucine. So all these amino acids are neutral. So this is the different types of the amino acid structure. That means acidic, basic, aromatic, and the neutral amino acid structure.
So this is all about the structure of the amino acid. So this after the amino acid, now it is joined one amino acid, and now it is called as the protein. That means the protein is the constituent. Protein is made up of by amino acid structure. So this is all about amino acid structure. If you like the video, please like and subscribe my video. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए और इसको बोलते हैं डीएस डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो पहले द वाटसन एंड क्रिक वो डिस्कवर किए थे द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए 1953 में। एक्चुअली उनके पहले फ्रैंकलिन इन द विल्किन वो डिस्कवर किए थे एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन सो वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किए थे उस डाटा में और उस डाटा से वाटसन एंड द क्रिक 1953 में डिस्कवर किए थे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो इसीलिए ये जो तीन है मतलब वाटसन, क्रिक एंड द विल्किन वो नोबेल प्राइज पाए थे, लेकिन वो फ्रैंकलिन नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन उस टाइम मर गए थे और नोबेल प्राइज हमेशा जिंदा लोग को दिया जाता है, मतलब जो मर गया है उसको नहीं दिया जाता है। इसलिए वाटसन, क्रिक एंड द विल्किन ये तीनों ही नोबेल प्राइज पाए थे। So now come to the double standard DNA structure. So ये double standard DNA structure है। Actually DNA different types है। एक होता है DNA A, एक होता है DNA B, एक होता है DNA C, एक होता है DNA Z और different structure का होता है। But maximum DNA और DNA B होता है। और हम जो DNA के बारे में जो पढ़ते हैं जानते हैं वो नॉर्मली वो डीएनए बी होता है। तो ये डीएनए बी होता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों उसको बोलता है? डबल स्टैंडर्ड मतलब दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड एक होता है, एक स्ट्रैंड वो होता है। एक स्ट्रैंड ए वाला होता है और एक स्ट्रैंड ए होता है। और ये एंटी पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। एंटी पैरेलली मतलब एक होता है 5 प्राइम से और एंड होता है 3 प्राइम पे, और एक स्टार्ट होता है 3 प्राइम पे और एक एंड होता है 5 प्राइम पे। मतलब वो उल्टा एक दूसरे में रहते हैं, इसलिए उसको एंटी पैरेलल डीएनए बोलते हैं। और डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। वो मेरे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो वो न्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो फॉर्म करते हैं। मतलब आर्जिनाइन बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन से और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लाइक साइटोसिन वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विथ गुआनाइन। सो इधर देखिए आर्जिनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है विथ थाइमिन, गुआनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया है विथ साइटोसिन। सो लाइक दैट इसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखिए एक होता है पिच, इससे उस तक इसको बोलते हैं पिच। पिच में एक होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप मतलब वो बहुत सारा डिप्रेशन आ गया है, उसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। माइनर ग्रुप मतलब बहुत थोड़ा डिप्रेशन आया है और इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। मतलब मेजर मतलब बहुत सारा नीचे और अंदर चला गया है, उसको बोलते हैं मेजर। जो थोड़ा अंदर गया है उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। देखिए उस पिच का लेंथ होता है 3.6 नैनोमीटर। देखिए वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट देता है, मतलब 3.2 से 3.6
नानोमीटर एक्चुअली वो वेरी करता है, किसी बुक में 3.32 लिखा आता है, किसी बुक में 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे लिखा जाता है, बट नॉर्मली 3.2 से 3.6 नानोमीटर। देखिए वो यूनिट देखिए, नानोमीटर मतलब 3.6 नानोमीटर, और एक बुक में लिखा जाता है 36 एंगस्ट्रॉम, वो सेम ही है। मतलब नानोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, सीधा नानोमीटर। एंगस्ट्रॉम में मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो 36 नानोमीटर और सॉरी 3.6 नानोमीटर और 36 एंगस्ट्रॉम, अब कुछ भी ले लीजिए सेम ये, और पिच का लेंथ है 36 एंगस्ट्रॉम और 3.6 नानोमीटर। और एक पिच में मतलब यहां से लेकर वहां तक 10.2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 10.2 और नियरली इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आता है कि ईच न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस क्या है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड है, और ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस कितना है। देखिए सीधी सी फॉर्मूला है, 36 एंगस्ट्रॉम है एक पिच में, और एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर और ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस होगा 36/10 इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नानोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नानोमीटर। तो और इसका डायमीटर है, मतलब डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो डायमीटर है वो डायमीटर का लेंथ होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोलते हैं 2 नानोमीटर। ये याद कर लेना, एग्जाम में आता है डायमीटर, डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नानोमीटर, एंड पिच लेंथ ऑफ द पिच डिस्टेंस 3.6 नानोमीटर और 36 एंगस्ट्रॉम। अगर पूछा जाएगा ईच न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिस्टेंस कितना है, तो 3.6 एंगस्ट्रॉम और 0.36 नानोमीटर। देखिए कभी कभार आप बुक में पढ़ेंगे, एक होता है ट्रिप्लेक्स डीएनए। ट्रिप्लेक्स डीएनए क्या होता है, नॉर्मली इन लो पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन में एक छोटा सा थर्ड स्ट्रैंड अगर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, और वो मिलके डुप्लेक्स के साथ वो ट्रिप्लेक्स फॉर्म बॉन्ड करता है और ट्रिप्लेक्स डीएनए फॉर्म करता है। तो वो थर्ड स्ट्रैंड जो होता है उसको बोलते हैं टीएफओ। टीएफओ मतलब ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सो ये थर्ड स्ट्रैंड होता है वो बहुत सा छोटा होता है, तो इसलिए ओलिगो मतलब ये फ्यू मतलब बहुत कम, तो एक कम न्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत छोटा है, और वो एसिडिक कंडीशन में ही वो होता है, मतलब एक थर्ड स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, और वो फिर वो डुप्लेक्स के साथ मिलकर वो ट्रिप्लेक्स फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्लेक्स डीएनए। देखिए और एक होता है जी क्वाड्रुप्लेक्स। जी quadruplex. Quadru means or quarter, the quadrant is 4. So normally देखिए ये डीएनए स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब से तो एक होता है आर्जिनाइन, एक होता है थाइमिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है गुआनाइन, एक होता है आर्जिनाइन। लेकिन एक सम रीजन है, कुछ रीजन होता है वो होता है जी, एक होता है सी,
होता है सी, होता है जी, तो जी, जी, टी, जी। तो इस एरिया को बोलते हैं जी रिच रीजन। जी मतलब गुआनाइन रिच रीजन, मतलब इस रीजन में गुआनाइन का परसेंटेज बहुत सारा ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो 4 गुआनाइन वो अपने आप के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और उसको बोलते हैं जी क्वाड्रुप्लेक्स। देखिए ये एक होता है जी क्वाड्रुप्लेक्स, इसमें एक स्ट्रक्चर एक होता है, एक मतलब 1 गुआनाइन। ये भी एक गुआनाइन है, इसको बोलते हैं सेकंड गुआनाइन। ये भी एक गुआनाइन है, एक होता है थर्ड गुआनाइन। ये भी गुआनाइन है, तो 4 फोर्थ गुआनाइन। मतलब 1 गुआनाइन, 2 गुआनाइन, 3 गुआनाइन, 4 गुआनाइन। तो ये को क्या होता है, उनका अंदर ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड ये 3 डॉट होता है, 3 डॉट मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट में दिखाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उसके सेंटर में हमेशा मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है। मोनोवैलेंट मतलब आइदर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मतलब 1 प्लस, और काटायन ही होते हैं, मतलब Cl माइनस नहीं होता है। मतलब Cl माइनस भी मोनोवैलेंट है लेकिन वो अनायन है। तो हमेशा काटायन मतलब सोडियम, पोटेशियम, यही वो हमेशा सेंटर में होता है। और वो क्यों होता है, उसको स्टेबल करने के लिए। तो हमेशा जी क्वाड्रुप्लेक्स कहाँ पर होता है, गुआनाइन रिच रीजन होता है, जी रिच रीजन में। और वो 4 गुआनाइन बॉन्ड फॉर्मेशन करके और अंदर में और मिडिल में सोडियम और पोटेशियम और मोनोवैलेंट काटायन प्रेजेंट होता है और उसको बोलते हैं जी क्वाड्रेट और जी क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए अभी आ जाते हैं कि कौन कौन फैक्टर है जो डीएनए स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबल वो डीएनए कैसे होता है, तो हमेशा स्टेबल होता है नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन। नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन क्या होता है, देखिए एक होता है कोवालेंट। कोवालेंट बॉन्ड मतलब वो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है। नॉन कोवालेंट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा लेकिन वो जल्दी तोड़ देगा, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमेशा वो स्टेबिलिटी डीएनए में नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन और नॉन कोवालेंट बॉन्ड वो स्टेबिलिटी देता है। कि एक होता है स्टैकिंग इंटरैक्शन, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, देखिए डीएनए स्ट्रक्चर में देखिए ये एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक होता है और एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम में है और एक 3 प्राइम में 5 प्राइम, मतलब ऑपोजिट है, मतलब एंटीपैरेलल है। और हमेशा उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, मतलब प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मैंने पहले बोला था आर्जिनिन और थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनाइन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बॉन्ड होता है वो जो बेस के अंदर होता है, मतलब आर्जिनिन और साइटोसिन के अंदर होता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं स्टैकिंग इंटरैक्शन। स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, इसमें 2 टाइप का है। एक होता है वैन वाल इंटरैक्शन, अनदर होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक होता है वैन वाल इंटरैक्शन, एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो इन दोनों का काम क्या है, ये हमेशा देखिए ये होता है
मतलब हमेशा हर बेस मतलब आर्जिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनाइन, ये होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। एक होता है पोलर स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। पोलर मतलब जो वाटर में डिजल्व होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एक होता है नॉन पोलर मतलब जो वाटर में डिजल्व नहीं होता है, मतलब वाटर में मिल नहीं जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। देखिए अभी वो डीएनए वो मतलब अंदर में हमारा क्या होता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर हाइड्रोफिलिक होता है, और वो बेस जो है वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब वो उसके साथ मिल नहीं सकता है, मतलब उसके साथ डिजल्व और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है और इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो वैन डर वाल इंटरेक्शन और द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इनका काम ही है वो ये जो बेस है उनको वाटर से दूर रखने के लिए, और इसको बोलते हैं मिनिमाइजेस द इंटरेक्शन ऑफ द वाटर। सो इसका काम ही है स्टैकिंग इंटरेक्शन का, वो वाटर के साथ मिलने नहीं देना। तो एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इन दोनों का काम है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करना। मतलब कैसे करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके। हमेशा वाटर के साथ जो भी इंटरेक्ट करता है, मतलब कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है और कोई भी है, वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके ही वो बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं इंटरेक्शन विथ वाटर, मतलब वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे 3 डॉट में दिखाया जाता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड उनका काम है वाटर के साथ इंटरेक्शन करने का, और स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है उनका काम है वाटर से दूर रखने के लिए। तो हमेशा स्टेबिलिटी स्टैकिंग इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर मतलब स्टैकिंग इंटरेक्शन ही मेनली स्टेबिलिटी देता है। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो देता है लेकिन वो बहुत कम देता है स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं माइनर फैक्टर। हमेशा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कौन कौन स्टेबिलिटी देता है, तो आप बोलेंगे स्टैकिंग इंटरेक्शन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर बोलेंगे कौन सा मेजर फैक्टर है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हमेशा होता है स्टैकिंग इंटरेक्शन। ओके, तो अगर वो स्टैकिंग इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वो टूट जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, तो लेट्स से देखिए ये एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर वो टूट जाता है और स्टैकिंग इंटरेक्शन, ए वाला इंटरेक्शन और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ये वाला इंटरेक्शन को टूट जाता है, तो क्या होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, टू स्ट्रैंड है। तो अभी अगर वो टूट जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो गए हैं। तो प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन। और इस डीएनए को बोलेंगे डीनेचुर डीएनए। और तो डीएनए डीनेचर कैसे होता है और कैसे वो बॉन्ड इंटरेक्शन क्यों वो टूट जाता है, देखिए आइदर वो टेम्परेचर के वजह से और पीएच के वजह से और सम केमिकल, फॉर एग्जांपल यूरिया। अगर यूरिया के इंटरेक्शन में डीएनए आएगा वो डीएनए टूट जाएगा और उसको बोलते हैं डीनेचर डीएनए। देखिए डीनेचर डीएनए, डीएनए डीनेचर हुआ है वो कैसे जानेंगे, देखिए वो कहता है आपके प्रैक्टिकल में एक होगा यूवी
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या होता है, उसमें एक वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, और हमेशा 260 नैनोमीटर वेवलेंथ में डीएनए ऑब्जर्व करता है मैक्सिमम। तो मतलब वो अगर मतलब एक 50, एक होता है 100, होता है 150, एक होता है 250, एक होता है 260। तो ये 260 नैनोमीटर में हमेशा डीएनए ऑब्जर्व मैक्सिमम करता है। मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व करता है, बहुत कम करता है, लेकिन जब से वो 260 आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम उसका 260 नैनोमीटर का है। देखिए वो जो ए वाला जो है इस लाइन, ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा। मतलब वो ऊपर यहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट 260 के बाद वो फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो अभी वो अगर वो डिनेचर हो गया, मतलब वो टेम्परेचर या पीएच और यूरिया की वजह से वो डिनेचर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, वो रेड वाला देखिए, लेकिन वो बहुत सारा ऊपर चला जाएगा। मतलब मैक्स बहुत सारा ज्यादा ऑब्जर्व करेगा 260 नैनोमीटर। तो उसको बोलते हैं, और इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। मतलब डिनेचर डीएनए ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। ज्यादा मतलब बहुत सारा ज्यादा ऑब्जर्व करता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। सो अगर डिनेचर होगा वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट देखा जाएगा। मतलब वो डीएनए ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। सेकंड होगा, एक होता है डेंसिटी, सॉरी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड buoyancy। वो buoyancy, विस्कोसिटी और buoyancy ऑफ डीएनए वो कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डिनेचर होगा, एक होता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, दैट मीन्स वो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बहुत सारा ज्यादा बढ़ जाएगा, और विस्कोसिटी और buoyancy बहुत सारा कम हो जाएगा। सो ये होता है टोटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब मैक्सिमम 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 सेकंड ही लगेगा, तो ज़्यादा कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इंस्पायर हो पाऊंगा। ओके, थैंक यू। Hello everyone. Today we will know about the structure of double stranded DNA. So the Watson and the Crick, they discovered the structure of the double stranded DNA in 1953. Actually before that, Franklin and the Wilkin, they discovered the X-ray diffraction of DNA. So from the data of the X-ray diffraction that was discovered by Franklin and the Wilkin, now Watson and the Crick discovered the structure of the DNA in the 1953. And for this, they all got the prestigious Nobel Prize except Franklin. Why? Because the Franklin was dead at that time, and Nobel Prize is only given to a live person. So that's why the Watson, Crick, and the Wilkin, they only got the Nobel Prize for the discovery of the DNA. But if in the exam it will be asked that who discovered the double stranded DNA, then Watson and the Crick.
Franklin and Wilkin, they only discovered the X-ray diffraction data, and from the X-ray diffraction data, now the Watson and the Crick, they discovered the structure of the double-stranded DNA. So now there are different types of DNA. Actually, there is called as the DNA A, DNA B, DNA C, DNA Z. So different properties of the DNA are present, and according to that the naming was present. So most of the DNA are the DNA B. So in our case, or in the human being, or in animal kingdom, or the plant kingdom, maximum DNA is the DNA B. So this is the structure of the DNA B structure. So here, why it is called the double-stranded DNA? Here two strands are present. Here it is the one strand, here another strand. So one strand is present from the 5' to 3'. And another strand is present in 3' and to 5'. That means they are present in the anti-parallel manner. So that means one strand is present from 5' to 3', and another is from 3' to 5'. So in the polynucleotide chain, this is a polynucleotide chain, this is another polynucleotide chain. So different types of the nucleotides are present here. So between the nucleotides, there is a bond is formed that is called the hydrogen bond. That means there are different types of nucleotide. And here the adenine forms two hydrogen bond with thymine. So like that, cytosine forms three hydrogen bond with guanine. So here the cytosine forms three hydrogen bond, and adenine forms two hydrogen bond with thymine. So in the previous video, we have already studied about the structure of the DNA. So now these nucleotides, or this double-stranded DNA, is present in the right-handed coiled structure. Right-handed coiled or right-handed helix structure. In the previous video, we have also studied about what is the left-handed, what is the right-handed helix structure. So this is the right-handed helix structure. That means the DNA is always present in the right-handed helix structure, or it is right-handedly coiled together. So now one is called as the pitch or the turn. So what is the pitch and turn? So this from this to this, from this to this is called a pitch. P-I-T-C-H. Pitch, or it is also called as a turn. So in the pitch, the distance of the pitch is 3.6 nanometer. So actually it varies from book to book. That means actually it is 3.2 to 3.6 nanometer. In some book, you can seen that it is a 3.3 or the 3.4 or 3.5. So mostly from 3.2 to 3.6 nanometer. So it is the nanometer. So that means if we, in some book it is also written as 36 angstrom. The same, the 3.6 nanometer in nanometer is equal to 36 angstrom. So the distance of a pitch is 3.6 nanometer or 36 angstrom. So in the pitch, there is a major group, there is a minor group. So what is the major group? There is a depression or a huge depression that is called as the major group, and there is a very slow depression that is called as the minor group. So now in the pitch, 10.2 nucleotides are present in every pitch. On an average 10.2 nucleotides, or it is nearly equal to 10 nucleotides
are present. So in exam it will be asked that what is the distance between each nucleotide. So now let's see. So this is the 3.6 nanometer of pH distance, and in the in one pH 10 nucleotides are present. So that means the difference between the each nucleotide is equal to 3.6 by 10, that is 0.36 nanometer, or it is called as 3.6 angstrom. Okay. So the diameter of the double stranded DNA, that means this one. The diameter of double stranded DNA is 20 angstrom, or it is called as the 2 nanometer. There is a unit, that is the nanometer. Nanometer is 10 to the power minus 9. Angstrom is 10 to the power minus 10. So either 20 angstrom or 2 nanometer is the diameter distance of double stranded DNA. So now sometimes there is called as the triplex DNA. Called the triplex DNA. So what is triplex DNA? And sometimes that means in the lower pH, that means in the acidic condition. In the acidic condition, one strand will form and it join to this duplex, and this third strand is called as the TFO, or it is called as the triplex forming oligonucleotide. Triplex forming oligonucleotides. So always this third strand is very small. So that's why it is called the oligonucleotides. Oligo means very small or few. So few nucleotides are present in the TF or third strand, or it is called as the triplex forming oligonucleotide. So now it joins to a duplex, and now it forms a triplex structure, or it is called as the triplex DNA. It is only present in the low pH or acidic condition. So the triplex DNA is sometimes, or it is written as purine dot pyrimidine, but this pyrimidine is written as italic. Italic means there is a underline below the pyrimidine. So that's why the PU is written as straight, PU is written as straight, but pyrimidine is written as italic letter. So this is the triplex structure of DNA. So now come to G quadruplex. So what is G quadruplex? G quadruplex. So quadru or quadrant, that means the 4. So what is the G? Why it is called as the G? Simply in the DNA there is a many area in which a guanine is present very rich. That means, let's say this is the structure of the DNA. Let's say this is the A, this is the T, this is the T, this is the A. They are the different types of the nucleotide. But in some region that is present like the C, G, G, C, G, G, A, G. So that is called as the G rich region. That means here very G, the guanine is present mostly, or the guanine rich region is present. So that is called the G rich region. So in that case, so the G quadruplex is present. So why? So in that case they fold each other. That means the 4 guanine structure. So 1 guanine, 2 guanine, 3 guanine and 4 guanine. So they form a G quadruplex structure like this. So here this is the G quadruplex. That means here it is the 1 guanine, here it is the another, this is the second guanine, this is the third guanine,
This is the fourth guanine. So they form, they fold each other by forming a bond with each other, and always at the center a monovalent element is present. That means mostly it is sodium or potassium. So why the monovalent of the sodium potassium is present? The presence of the sodium and the potassium, they provide the stability of the G quadruplex. So that's why the G quadruplex is present always where the guanine rich region is present in the structure of the DNA. And always in the center a monovalent, especially its sodium or the potassium elements are present to provide the stability to the DNA. So now come to which factor provides the stability to the DNA. So always the non-covalent interaction provides the stability of the DNA. So there are the two types of the interaction that provides the stability. The non-covalent can be two types. One is called the stacking interaction. And another is called as the hydrogen bonding. So what is the stacking interaction? Look at the structure of the DNA. So this is the one polynucleotide chain. This is the another one. So one stands from 5 and ends with 3, and another is starts from 3 and ends with 5. That means they are present in the antiparallel structure. So these are the different types of the nucleotides present. That means adenine, thymine, cytosine, guanine. So there are the three types of bond. One is called as this bond. That means in the polynucleotide structure, this bond is called as the phosphodiester bond. In the previous video we have already studied. You can see them. So another structure is called as the hydrogen bond. So hydrogen bond, that means the bond is formed between the nucleotides. So between the complementary nucleotides, the hydrogen bond is formed. So another bond is formed between the bases, and this bond is called as the stacking interaction. So what is the stacking, or what is the bond? So the stacking interaction, first one is the van der Waals interaction. Another is the hydrophobic interaction, the hydrophobic bond or the hydrophobic interaction. So this is the stacking interaction. That means the bond which is formed between the bases is called as the stacking interaction, and this is the major force or major factor which provides the stability to the DNA. So another bond is called as the hydrogen bond. It also provides the stability, but it is the minor one, a minor factor that provides the stability of the DNA. So the other tip, one is the stacking interaction, another is the hydrogen bond. So van der Waals and the hydrophobic interaction, what is the function of this interaction of the bond? They minimizes the interaction of the water to the non-polar bases. Always the bases, the adenine, guanine, cytosine, thymine, so they all are the non-polar structure. But in the aqueous environment, in our body, mostly water is present.
So that's why water is the hydrophilic. So hydrophilic structure cannot interact with the non-polar structure. So that's why the non-polar, the nucleotides, they are present inside it. The outside the phosphodiester bond is formed, and the inside the stacking interaction is formed. So the stacking interaction, the van der Waals force and the hydrophobic interaction, they minimizes the interaction of the water to the non-polar bases. So what is the function of now the phosphodiester bond? So it forms the hydrogen bond with the water molecule. So the phosphodiester bond is hydrophilic. That means they can interact with the water, but the starting interaction, they cannot interact with the water molecule. So that's why the hydrophobic and the van der Waals force, they minimizes the interaction of the water to the non-polar bases. So this is the two types of the interaction, stacking and the hydrogen bond, and this is the major and this is the minor factor for the stability of the interaction. But once either the stacking interaction of the hydrogen bond is disrupted, now the DNA will be denatured. So what do you mean by denatured DNA or denatured DNA? So that means now the double stranded DNA, let's say this is the double stranded DNA. So after the denaturation, they forms a single stranded. So this is called as the denatured structure. So how the denature is occur? Either the temperature, either change in pH, or in some chemical, for example urea. So they denature the structure of the double stranded DNA. So when the structure of the DNA is denatured, it can be determined in the UV spectrophotometer. So what is the UV spectrophotometer? In the practical you will be studying that the DNA absorbs maximum at 260 nanometer. So let's say this is the graph of the double stranded DNA. So this is the double stranded DNA graph. So at the 260 nanometer, let's say this is the 10, 100, 200. So this is the 260. At the 260 nanometer, what is the nanometer? That is the wavelength. So at the 260 nanometer wavelength, the DNA absorbs maximum. So that's why this is the absorption maximum of double stranded DNA. So what is how we will know that the DNA is denatured? If the DNA is denatured, that means if the stacking interaction of the hydrogen bond are disrupted, then the absorption maxima increases very, very much. So this effect is called as hyperchromic effect. Hyperchromic effect. So that means when the DNA is denatured, the absorption maxima increases very much from that of the normal one, and the effect is called as the hyperchromic effect. So one is the hyperchromic effect is found if the DNA is denatured, and again the viscosity and buoyancy decreases. So that means once the DNA is denatured, one effect is the hyperchromic effect. That means the absorption maxima increases, and another is the viscosity and the buoyancy of DNA decreases. This is the
effect of the denature DNA. So this is the all about the double stranded DNA structure. So if you like, then please like and subscribe my channel. It will take maximum 2 seconds or the 1 second. So please subscribe. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए, वो न्यूक्लिक एसिड तो उसको पहले डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मिक्सचर ने। तो वो फ्रेडरिक मिक्सचर वो डिस्कवर किए थे। कहाँ से? उसमें वो पॉस सेल और पॉस में वो डिस्कवर किए थे। पॉस मतलब वो बैंडेज वो होता है, जो मेडिकल में जो बैंडेज है, तो बैंडेज में पॉस होता है। पॉस में क्या होता है? वो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं भी WBC। तो WBC और ल्यूकोसाइट और पॉस सेल में वो पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किए थे और उसका नाम दिए थे न्यूक्लियन। तो उसके बाद रिचर्ड ऑल्टमैन वो डिस्कवर किए और उसको टर्म दिए न्यूक्लिक एसिड। So always nucleic acid first discovered किए थे फ्रेडरिक मिक्सचर, बट द नेम न्यूक्लिक एसिड वो दिए थे रिचर्ड ऑल्टमैन। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, सो पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अनदर न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे सब जॉइन होके उसको पॉली मतलब मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को। सो फर्स्ट कम टू न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, ए वाला है। सेकेंड होता है शुगर एंड थर्ड होता है फॉस्फेट। ये 3 स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर विथ फॉस्फेट। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखिए, एक और होता है न्यूक्लियोसाइड। वो क्या होता है? तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट मीन्स ये बेस और शुगर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड वो क्या होता है? मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो मतलब ये टोटल को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस क्या होता है हम देखेंगे। सो नाइट्रोजनस बेस क्यों उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस? बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, मतलब नाइट्रोजन बहुत सारा है। देखिए, ये सब है नाइट्रोजनस बेस, इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन है, इसलिए उसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। देखिए, 2 टाइप्स होता है नाइट्रोजनस बेस। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन। सो प्यूरिन क्या होता है? वो होता है 2 साइकिल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें 2 साइकिल है। देखिए, ये प्यूरिन है, उसमें एक साइकिल ए है, सेकंड साइकिल ए है, एक साइकिल ए है, सेकंड साइकिल ए है। लेकिन पायरीमिडीन में सिंगल साइकिल होता है, मतलब ये पायरीमिडीन है, इसमें एक ही साइकिल है, तो इसलिए प्यूरिन को 2 साइकिल बोलते हैं एंड पायरीमिडीन को एक साइकिल बोलते हैं। प्यूरिन में कौन कौन आता है? एक होता है आर्डेनाइन, एक होता है गुआनाइन। आर्डेनाइन, गुआनाइन, इसमें प्यूरिन आता है। पायरीमिडीन में कौन आता है? साइटोसिन आता है
यूरासिल आता है, थाइमिन आता है। देखिए दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए में आर्डेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है, थायमिन है, बट यूरासिल नहीं है। बट आरएनए में सभी है, मतलब आर्डेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरासिल है। सो इसमें सब कुछ है, लेकिन डीएनए में यूरासिल नहीं है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। सो प्यूरिन स्ट्रक्चर को आप देखेंगे अभी। देखिए प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है, इसको नंबरिंग करते हैं कैसे, देखिए ये एक होता है फर्स्ट कार्बन ए वाला, ये होता है सेकंड कार्बन, ये होता है थर्ड कार्बन, ये होता है फोर्थ कार्बन, ये होता है फिफ्थ कार्बन, ये होता है सिक्स्थ कार्बन, ये होता है सेवेंथ कार्बन, ये होता है एट्थ कार्बन, ये होता है नाइन्थ कार्बन। नाइन्थ कार्बन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर, इसमें जॉइन होता है। जॉइन कहाँ से होता है, वो नाइट्रोजनस बेस में, तो ये नाइन्थ पोजीशन में ही जॉइन होता है। मतलब ये नाइन्थ पोजीशन ए वाला पर्सन है, उस वो ही ज्वाइन करता है कहाँ पर, शुगर पर। तो इसको रिमेम्बर कीजिएगा कि नाइन्थ पोजीशन इन केस ऑफ द प्यूरिन, हियर ऑल्सो द नाइन्थ पोजीशन, तो मतलब शुगर बाइंड करता है नाइट्रोजनस बेस पर। तो एक होता है ऑलवेज प्यूरिन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है पायरिमिडिन के साथ। So that means आर्डेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा, और कैसे बॉन्ड करेगा, विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड करेगा गुआनिन के साथ, कैसे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। देखिए वो थाइमिन जो होता है वो डीएनए कंडीशन में होता है। इन द डीएनए आर्डेनाइन थाइमिन के साथ रिएक्शन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आरएनए होता है तो सेम आर्डेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विथ यूरासिल, क्योंकि यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। तो इसलिए आर्डेनाइन थाइमिन के साथ भी करेगा, यूरासिल के साथ भी करेगा। अगर डीएनए वो थाइमिन के साथ करेगा और आरएनए तो यूरासिल के साथ करेगा। और कैसे करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए Cg को बोलते हैं मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ज्यादा एनर्जी लगता है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो 2 है, 2 को तोड़ने से ज्यादा 3 और ज्यादा कठिन है। इसलिए मतलब सी और जी में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए सी जी जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको स्टेबल बोलते हैं इन कंपैरिजन टू द ए एंड द टी। तो एक होता है नाइट्रोजनस बेस, तो उसको कौन बाइंड करेगा, शुगर बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर। ये शुगर हमेशा डीएनए हो कि आरएनए हो, वो 5 साइकिल स्ट्रक्चर होता है, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 रिंग स्ट्रक्चर में होता है। तो 5 रिंग स्ट्रक्चर। तो डी मतलब जो भी शुगर है, मतलब शुगर 2 टाइप का होता है, एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज मतलब ये बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज इसको बोलते हैं। तो इसमें बोथ में 5 रिंग होता है, 1 2 3 4 5। उसको नेम कैसे करते हैं, देखिए एक होता है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, और डैश जैसे बोलते हैं 3 प्राइम
फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम। दैट मीन्स आपको अगर बोलेगा 2 प्राइम, दैट मीन्स इस कार्बन, 3 प्राइम मतलब इस कार्बन। देखिए वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि राइबोज क्या है, राइबोज शुगर आरएनए में दिखा जाता है और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में दिखा जाता है। सो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या है, वो 2 प्राइम स्ट्रक्चर में देखिए, ईयर राइबोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में H प्रेजेंट है, मतलब वो मिसिंग है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर डीएनए में दिखाता है, राइबोज जो होता है ये बोलते हैं उसको आरएनए में दिखाया जाता है। तो डिफरेंस एक ही है, आरएनए में जो शुगर दिखाता है उसमें OH है और डीएनए में जो है उसमें H है। देखिए इसमें जो OH है इसमें एक लोन पेयर है, सो उसका मतलब एनी मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो बाइंड नहीं कर पाएगा मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा डीएनए मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द आरएनए। आरएनए लेस स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। ओके, सो नाउ कम टू द न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। देखिए ये होता है बेस, ये होता है शुगर। इसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। के बीटा क्यों बोलते हैं, बीटा मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऊपर है, मतलब वो अगर नीचे होता तो उसको बोलते हैं अल्फा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट क्योंकि वो ऊपर है तो इसलिए उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो नाउ कम टू द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस होता है, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए इसको बोलते हैं शुगर, ये है बेस, ये बेस होता है एक्चुअली आर्डेनाइन, तो अभी के लिए आर्डेनाइन है, ग्वानाइन भी हो सकता है, साइटिन भी होता है, यूरेसिल भी हो सकता है। तो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप और इसको बोलते हैं PO4 माइनस, 3 फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वाला जो बॉन्ड बाइंड करता है उसको बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, सेकंड वाला को जो बोल करते हैं बीटा, और थर्ड वाला फॉस्फेट को बोलते हैं गामा फॉस्फेट। देखिए वो शुगर है, एक होता है फॉस्फेट, उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो उसका मतलब क्या है, देखिए फॉस्फेट ग्रुप हमेशा शुगर के साथ जो बॉन्ड करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन जो फास्फर एंड फास्फोरस उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। तो ये भी बीच का बॉन्ड है, इसको ही बोलते हैं फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। ओके, सो ये टोटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ATP। ATP मतलब आर्डेनाइन ट्राई
फॉस्फेट। क्यों बोलते हैं? देखिए ये एक बेस होता है आरएनआइन, ट्राईफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आरएनआइन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी क्या होता है? वो एनर्जी होता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के रूप में एटीपी का यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आरएनआइन ट्राईफॉस्फेट। सो इमेजिन करिए एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप अभी है, तो उसको बोलते हैं एडीपी। तो मतलब आरएनआइन डाईफॉस्फेट, डाई मतलब 2, तो अभी 2 है। तो इमेजिन करिए और एक निकल गया है, तो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं एएमपी और आरएनआइन मोनोफॉस्फेट। तो हियर आरएनआइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरएनआइन बेस है। लेट्स से आरएनआइन का जगह, तो इस जगह थाइमिन है, तो उसको अभी बोलेंगे, अगर 3 फॉस्फेट है उसको बोलते हैं टीटीपी, मीन्स थाइमिन ट्राईफॉस्फेट। अगर 2 है उसको बोलते हैं थाइमिन डाईफॉस्फेट, टीडीपी। अगर 1 है उसको बोलते हैं थाइमिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड होता है। तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड, सो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड, मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसको ही बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द डीएनए। देखिए उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए में होता है। मतलब आप जो डीएनए में जो दिखते हो वो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, सो ये ज्वाइन होके फॉर्मेशन करता है डीएनए और तो आरएनए, जो भी बोलते हो। देखिए अभी क्या होता है, देखिए अभी ये क्या हुआ है, वो साइटोसिन है, उसके साथ थाइमिन ज्वाइन हुआ है, उसके साथ गुआनाइन ज्वाइन हुआ है, उसके साथ आर्जिनाइन ओके ज्वाइन हुआ है। अब अभी आप देखिए कैसे ज्वाइन हुआ है। देखिए वो साइटोसिन है, तो ये स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है। अभी ये है थाइमिन, इसको क्या बोलते हैं? टीटीपी। और थाइमिन ट्राई फॉस्फेट। तो अभी क्या होगा, वो 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, मतलब बीटा गामा निकल जाएंगे। ओनली अल्फा फॉस्फेट क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पर? वो जो पहले का है, एक ये क्या हुआ है, वो साइटोसिन है, ये वाला जो है, उसमें 1 2 3 4 5th कार्बन, तो वो किसके साथ बॉन्ड करेगा? हमेशा 3rd कार्बन में ही बॉन्ड करेगा। तो हमेशा इसलिए 3 प्राइम ओ एच के साथ वो फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? हमेशा फॉस्फर एंड शुगर के बीच। तो ये वाला भी होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये भी शुगर है, तो ये वाला भी जो बॉन्ड है ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और 2 फॉस्फेट ग्रुप और 2 PO4 ग्रुप निकल जाएगा। अभी देखिए स्ट्रक्चर में एक होता है साइटोसिन, अभी वो टीटी पे आया है, टीटी में 2 निकल गया, 2 PO4 निकल गया, मतलब एक PO4 वो कहाँ जाके ज्वाइन करा है, वो 3 प्राइम अब साइटोसिन जो है उसके साथ ज्वाइन करेगा, और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो उसके बाद अगेन गुआनाइन, मतलब यहाँ क्या होगा, वो जीटीपी मतलब गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा,
2 PO4 निकल जाएगा, एक जो होगा उसके साथ अगेन फिर से 3 प्राइम में ज्वाइन करेगा, उसके बाद आर्जिनिन मतलब ATP आएगा, आगे 2 PO4 निकल जाएगा, एक वो 3 प्राइम में बॉन्ड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमेशा फर्स्ट एंड को बोलते हैं 5 प्राइम, इसको बोलते हैं लास्ट एंड को 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम में मतलब स्टार्टिंग 5 प्राइम है और लास्ट में हमेशा 3 प्राइम होता है, क्योंकि उसके साथ ही हमेशा बाइंड होता है। तो हमेशा देखिए डीएनए स्ट्रक्चर मतलब एक डबल हेलिकल होता है, एक सिंगल हेलिकल होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमेशा आप बुक में देखेंगे इसमें इसको लिखा जाता है 5 प्राइम 3 प्राइम। दैट मीन्स 5 प्राइम मीन्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 3 प्राइम मतलब यहाँ पर लास्ट हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम और द 3 प्राइम। तो ये और एक होता है चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल, चारगाप मतलब ये चारगाप जो है वो डिस्कवर किए थे। वो क्या किए थे? वो परसेंटेज ऑफ आर्जिनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडिन। प्यूरिन क्या होता है? आर्जिनिन एंड द गुआनिन। पायरीमिडिन में आता है साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरासिल। मतलब यूरासिल होता है कब? जब आरएनए होता है, और डीएनए होता है वो होता है साइटोसिन। तो वो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आर्जिनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन। दैट मीन्स आर्जिनिन जितना है उतना परसेंटेज थायमिन है, एंड साइटोसिन जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज गुआनाइन है, और प्यूरिन परसेंटेज जितना है उतना परसेंटेज पायरीमिडिन भी है। उसका मतलब A प्लस जी, अभी देखिए प्यूरिन मतलब A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी। तो अगर डीएनए है मतलब आरएनए होगा तो C प्लस यू होगा, तो यूरासिल होगा। ओके, बट इसका मतलब A नहीं कि A प्लस टी इज इक्वल टू C प्लस जी, ये कभी नहीं होगा। तीन ही है, A इक्वल टू टी होगा, C इक्वल टू जी होगा, प्यूरिन इक्वल टू पायरीमिडिन। दैट मीन्स A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी होगा। देखिए मनो एग्जाम में आएगा, ये हमेशा आता है। देखिए लेट्स से एग्जाम में आया कि साइटोसिन 20% है टोटल डीएनए में, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, गुआनाइन एंड थायमिन। मतलब साइटोसिन दे दिया है 20% है, तो इसमें सॉरी गुआनाइन, थायमिन एंड आर्जिनिन कौन से प्रोपोर्शन में है? तो देखिए अभी C 20% है, तो हमें देखिए C इज इक्वल टू जी, C इज इक्वल टू जी, तो उसका मतलब G भी 20% है। तो उसका मतलब C हो गया 20%, G हो गया 20%, तो टोटल कितना हो गया 40%। तो उसका मतलब A एंड T वो कितना परसेंटेज में होगा? 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% होंगे। तो मतलब A एंड T मिलके 60% होगा। तो उसका मतलब क्या है? A इज इक्वल टू T, वो क्या होता है 60%, मतलब टोटल मतलब A प्लस टी, अब ये 60%, तो मतलब A इज इक्वल टू 30, मतलब आधा आधा हो जाएगा, A इक्वल टू टी, मतलब दोनों सेम है, वो टोटल 60% है। उसका मतलब A भी 30% है, T भी 30% है। तो उसका मतलब अगर G अगर 20% होगा तो G भी मतलब गुआनाइन भी 20% होगा, आर्जिनिन 30% होगा, एंड द थायमिन भी 30% होगा।
ओके, तो एग्जाम में आएगा तो हमेशा याद करके अच्छे से करना। तो ये हो गया है आपका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होता है। और एक बात भूल गया, देखिए आप इतना सारा व्यू करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 या 2 सेकंड लगेगा, तो प्लीज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। Hello everyone. Today we will know about the nucleic acid. So first, the nucleic acid, it was discovered by Frederick Mixture. So the Frederick Mixture, he discovered the nucleic acid in the post cell. That means in the bandage. So in the post cell, actually the leukocyte was present. Leukocyte, or it is also called as the WBC. So WBC or the leukocyte in the post cell, the Frederick Mixture discovered the nucleic acid and he named the term nuclein. But after that, Richard Altman, he actually termed the coin nucleic acid. So the term the nucleic acid, it was coined by Richard Altman. So now first come to the what is the nucleic acid. So the nucleic acid, there are the two types of the nucleic acid. One is called as the DNA, another is called as the RNA. What is the DNA? DNA is called as the deoxyribonucleic acid. And the RNA is called as the ribonucleic acid. So there are the two different types of the nucleic acid. One is called as the DNA, another is the RNA. So what is the nucleic acid, or what are the DNA, the RNA? They are simply the polynucleotides. Polynucleotides. So poly means many. So that means more than one nucleotide. They are joined together to form the polynucleotides or the nucleic acid. So first come to the what is the nucleotides. So this is the structure of a nucleotide. So in the nucleotide, there are the three structure. The first one is called as the nitrogenous base. This structure is called as the nitrogenous base. The second one is called as the sugar. And the third one here, it is called as the phosphate. So these three structures, that means nitrogenous base, sugar along with the phosphate, they are combined together to form the nucleotides. So another word is called as the nucleoside. So nucleoside means the nitrogenous base plus sugar. It is called as the nucleoside. The term nucleotide is called after the base plus sugar plus phosphate group. When two structures are found, that means base and the sugar, then it is called as the nucleoside. When three structures, that means base, sugar with phosphate, then it is called as the nucleotide. So first come to the first structure, that is the nitrogenous base. So why it is called as the nitrogenous base? Because here the maximum nitrogen is found more in the case of the nitrogenous base. That's why it is called as the nitrogenous base. So the nitrogenous base, there are the two types of the nitrogenous base. One is called as the purine, another is called as the pyrimidine. So the purine,
It is the two cycle structure and it is the one cycle structure. So that means these are the structure of the purine. That means here the two cycle, one, this is the second. Here the one and the second, two cycle are present. But they are the structure of the pyrimidine. Here single cycle are present. Okay, so in the purine, the adenine and the guanine are present. And the pyrimidine, the cytosine, uracil and the thymine are present. So here the cytosine, uracil, thymine, so they are the pyrimidine, and the adenine and the guanine, they are the purine structure. So always in the DNA, all structure are found except the uracil. So that means in the DNA, adenine is found, guanine is found, cytosine is found, thymine is found, but no uracil is found. The uracil is found only in the RNA. So that means in the RNA, all types of the nitrogenous base. That means adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. So all types of the nitrogenous base are found in the RNA. So now come to, and again, look at the purine structure. So it has 9 carbon. So look at the structure. This one is the first carbon. This one is the second carbon. This is the third carbon. This is the fourth carbon. This is fifth carbon. This is sixth carbon. This is seventh carbon. This is eighth carbon. And this is ninth carbon. Here also the 9 carbons are present. So why it is important? Because this base, it joins to the sugar. Here it is the nitrogenous base, here the sugar. Here the base always binds to the 9th position of the nitrogenous base. So that means here the sugar, here it joins by this group or the 9th carbon. So always the purine, it adds to the sugar at the 9th position. It is very, very important. So the purine are the two cycle structure and the pyrimidine has the single cycle structure. So again the adenine, they forms the bond with the thymine. So always the purine can forms the bond with the pyrimidine. So here the adenine forms the bond with the thymine. In case of the DNA, in case of the RNA, adenine forms the bond with the uracil. So here the bond means 2 hydrogen bonds are formed between the adenine and the thymine or the adenine with the uracil. But the cytosine, it can form the hydrogen bond with the guanine, and here the hydrogen bond is the 3. But between the A and the T, 2 hydrogen bonds are present. So that's why the C and the G are the more stable. Why it is more stable? Because it requires more energy to break down the C and the G triple bond. Because here more bonds, more hydrogen bonds are formed. That means 3 hydrogen bonds are formed, whereas here 2 hydrogen bonds are formed. So it will easy for the breakdown of the A and the T. That means 2 hydrogen bond in comparison to 3 hydrogen bond. That's why C and the G are very stable in comparison to the A and the T. So now this is the nitrogenous base. So now come to the sugar. This is the structure of the sugar and it joins to the nitrogenous base at the 9th position in case of the purine. So next come to the sugar. So they are the sugars. So they are the 2 different types of the sugar. One is called as the ribose sugar. Another is called as the deoxyribose sugar. So always in the DNA or the RNA or in the nucleic acid, the sugar are 5-ring structure.
So here in the ribose and the deoxyribose, 5 ring structure are found. That means 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ring structure are found. So there are the two different types of the sugar. That means called as the ribose. Here it is called as the ribose. It is called as the deoxyribose, or it is called as the 2-deoxyribose. So the ribose sugar, it is found in the RNA. So the deoxyribose, it is found in the DNA. So what is the difference between the ribose and the deoxyribose? So look at this ribose structure. So here the carbon, here it is the first carbon, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon, and here it is the fifth carbon. So in the ribose, here it is the second carbon, or it is called as the second, means it is called as the 2 prime. First carbon means it is called as the first prime. So at the 2 prime structure, here a OH group is present. While in the 2-deoxyribose or in the deoxyribose at 2 prime structure, here only one hydrogen group is found. So that's why it is called as the deoxyribose, deoxy. That means one oxygen group is eliminated. So in the deoxyribose, one oxygen group is eliminated. That means only single hydrogen group is present. So that is only the difference between the ribose and the deoxyribose. And why the DNA is more stable than RNA? Because RNA has this sugar structure. So that means in this condition, here any molecule can again bind to this because it has a lone pair. But here any molecule cannot bind. That means it has no lone pair left. So that's why the DNA is more stable. That means it cannot be simply modified. But ribose, it can be modified by adding any molecule to this OH structure. That's why the DNA is more stable in comparison to the RNA. So this is the structure of the nucleoside. So nucleoside means nitrogenous base plus sugar. So this is the sugar. This is the sugar, and this is the nitrogenous base. So they are joined together by a bond, and here the bond is called as the beta N glycosidic bond. So why it is called as the beta? Beta means this structure is present at the upper side. In the previous video, we have already discussed that what is the alpha and what is the beta. So this structure is present at the upper side. That's why it is called as the beta. So let's imagine this structure is found at this side. Then it is called as the alpha glycosidic bond. So always if it is present at the lower side, then it is called as the alpha. When it is present at the upper side, then it is called as the beta. So always the sugar is bound to the nitrogenous base by the forming a bond here. It is called as the beta N glycosidic bond. Okay, so this is the nucleoside structure. Now come to the nucleotide structure. So what is the nucleotide? Nucleotide means base plus sugar plus phosphate. So that means here it is the sugar, it is the base, and they are the phosphate. Or it is called as the PO4. So 3 phosphates are joined here. 1, 2, and 3. And here it is joined by a bond, and it is called as the phosphodiester bond. Phosphodiester bond. And here the bond is called as the
phosphoanhydride bond. So that means the bond between the phosphate and the sugar is called as the phosphodiester bond. And here the bond between the phosphate is called as the phosphoanhydride bond. Here the bond is also called as the phosphoanhydride bond because here it is the bond between the two phosphate group. So here this is the called as the nucleotide structure, and the whole, and here the base is adenine. This structure is called as the adenine. So this is the structure of the nucleotide, and it is called as the ATP. So that means adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate. Why? Here it is the adenine is base, triphosphate. That means 1, 2, 3. 3 phosphate group is present. The first phosphate group, it is called as the alpha phosphate group. The second phosphate group is called as the beta phosphate group. And the third phosphate group is called as the gamma phosphate group. So 3 phosphate group are present, that is called as the ATP or the adenosine triphosphate. And this is the energy form. In case of our body or the biological organisms, the ATP is needed, and this is the structure of the ATP. So let's imagine this structure is absent. That means the gamma is removed. So now it is called as the ADP. That means adenosine diphosphate. That means only alpha and the beta is present. So now imagine again this phosphate is also removed. Now it is called as the AMP. That means adenosine monophosphate. So okay. So in the ATP, 3 phosphate group is present. In the ADP, 2 phosphate group is present. In the AMP, single phosphate group is present. So this is the structure of the nucleotide. So now come to what is the structure of exact DNA of the RNA, or simply called as the polynucleotide. So polynucleotide means one nucleotide, another nucleotide, they are joined together to form the polynucleotide. Okay. So this is the structure of the polynucleotide. That means one cytosine, then thymine, then guanine, then adenine. So they are joined together. So let's see this structure. This is the cytosine. The same structure here. Okay. So next a thymine group is added. This is called as the TP. That means thymine triphosphate. Why it is called as the thymine triphosphate? Because here it is the base, and the base is the thymine. If it is present in the adenine, then it is called as the ATP. If it is present at the guanine, then it is called as the GTP. So next, in the cytosine, a thymine is added. So how the thymine group is added? Now look at this structure. This is the TTP or the thymine triphosphate. Here, this is the alpha, this is the beta, this is the gamma phosphate group is added. So now this beta and the gamma group, they are eliminated. So only alpha group or alpha phosphate group, it is added to the 3' structure. 3' means it is the first carbon, it is the second carbon, it is the third carbon. That's why it is called as the 3'. So the 3' to the OH group by the forming a bond that is called as the phosphodiester bond. So always
the bond between the phosphate and the sugar is called as the phosphodiester bond. It is also called as the phosphodiester bond. So here, by the forming a bond between this sugar, then it is called as the phosphodiester bond. So always it binds to the 3' structure. Please remember 3' structure. So now look at this structure. So here it is the thymine, here the sugar, here it is the first phosphate group, and this is added to the 3' of the cytosine, and 2 phosphate groups are removed. So again, let's say guanine. That means again the first phosphate group it is added to this, and 2 phosphate group again they are released. So like that, this is the polynucleotide structure. So always this first end is called as the 5' because here is the 5th carbon, a phosphate group is added, and always here the last position it is called as the 3' because at the 3' condition of the 3' structure any molecule can be added. So that's why if in the DNA structure, the next class we will study, in the DNA structure it is designated as 5' to 3'. That means here the 5' means this end is present, the 3' that means this end is present, that is the last one. So this is the structure of the nucleotide, the polynucleotide, the nucleic acid structure. So now another rule is present, that is called as the Chargaff's rule. Chargaff's rule. So what is the Chargaff rule? That means, why it is called the Chargaff rule? Because it was discovered by Chargaff. So they call that the percentage of adenine is equal to percentage of thymine. So that means there are the 2 types of the nitrogenous base. One is called as the purine, that means adenine and the guanine, and the pyrimidine, cytosine, thymine, and the uracil. So always it tells that, according to this rule, the percentage of adenine is equal to percentage of thymine because adenine bonds with the thymine. So the percentage of C or the cytosine is equal to percentage of guanine, and the percentage of purine is equal to percentage of pyrimidine. That means the percentage of adenine plus guanine is equal to percentage of cytosine plus thymine. In case of the DNA, in case of the RNA, C plus U. Okay, so like that in exam it will be asked that let's example, if it will ask that if the percentage of cytosine is 20%, then what are the percentage of adenine, guanine and the thymine? So now look at the structure, and again this is the 3 rule, that means adenine equal to percentage of thymine, cytosine is equal to percentage of guanine, adenine plus guanine is equal to cytosine plus thymine, but that doesn't mean that A plus T is not equal to C plus G. A plus T is not always equal to C plus G. That is important. A is equal to T, C is equal to G, but A plus T is not equal to C plus G. Only the purine, that means A plus G is equal to C plus T. So now in the question, if it will
will be asked that the percentage of cytosine is 20%, then what will be the percentage of adenine in the guanine and the thymine? So now the percentage of cytosine is 20%. So that means C is equal to G. That means the percentage of the guanine is also 20%. So now we have C is the 20%, guanine is the 20%. So that means C plus G. That means they have the total 40%. So if the 40%, that means A and T, it will be total 100 minus 40, that will be the 60%. So that means the A is equal to T. That means by 60 by 2, that means 30. That means A is equal to 30% and T is also equal to 30%. So this is the all about the Chargaff's rule. So in the next slide, we will study about the structure of the nucleic acid, or the structure of the DNA structure, or the double helical structure, single helical structure is like that. So this is all about the nucleotide structure. And one more concern, that all you are just watching but not subscribing it, please subscribe it. It will take maximum 2 seconds here, 1 second.